Good morning. The name of the poem is The Psalm of Life, and the poet of this poem is H.W. Longfellow. I am going to teach you the second stanza of this beautiful and inspiring poem. I am going to write it, and I hope that you will read it carefully. Not enjoyment and not sorrow. Not enjoyment, not enjoyment and not sorrow. And not sorrow. Not enjoyment and not sorrow is our destined end. Is our destined end or way. But to act, that each tomorrow, that each tomorrow finds us further than today. Not enjoyment and not sorrow is our destined end our way, but to act that is tomorrow finds us further than today. Not enjoyment. Enjoyment means होता है खुशी. Enjoyment means खुशी. And not sorrow. Sorrow means दुख या गम. Is our destined. Destined means होता है written in luck. भाग में वर्णित, भाग में लिखा हुआ. End. End का मतलब उद्देश्य भी होता है और समाप्ति भी होता है. और वे का मतलब जो है इसको स्टाइल कहते हैं, शैली या तरीका. बट टू एक्ट. एक्ट मीन्स होता है कार्य करना, और इसी का जो है वो नाउन है एक्शन. एक्ट मीन्स कार्य करना. टू एक्ट. दैट ईच मीन्स प्रत्येक. टुमारो मीन्स आने वाला कल, और यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल. फाइंड्स अस फर्दर. फार मीन्स होता है दूर या फेयार. फार, फर्दर, फर्देस्ट. और उसी के जो है वो कंपेरेटिव डिग्री है फर्दर. फार मीन्स दूर, फर्दर मीन्स और दूर. दैन टुडे. दैन तुलना में, टुडे आज. Not enjoyment and not sorrow, your destined end our way. The poet tells us that it is not prefixed in our luck that we have to find enjoyment and sorrow in our future days. The poet tells us that it is not prefixed that in our coming future we shall have to get enjoyment and sorrow. A man gets enjoyment and sorrow when time comes. It is not prefixed. माने कवि ये कहता है कि ये पहले से भाग्य में लिखा हुआ नहीं है कि आप जो है अपनी जिंदगी में और जो है प्रसन्नता या दुख पाते हैं, या जो है आपके जीवन का जो है उद्देश्य भी जो है वो पहले से वर्णित नहीं है. आदमी कार्य करता है और अपना उद्देश्य जो है क्लियर करता है, अपना जो भाग्य जो बनाता है. इट मीन्स मैन इज द ओन मेकर ऑफ हिज फेट. Not enjoyment and not sorrow is our destiny in our way. It is not prefixed in the life of a man that
enjoyment and sorrow are found in the life of a man. But to act that is tomorrow finds us further than today. Our main target in human life is to work only, to act only. Means man has come in this world to act. It is his duty that he should do his duties, his work. But to act माने लेकिन कार्य करना, बट टू एक्ट लेकिन कार्य करना. और क्यों कार्य करना? दैट इज टुमारो, जिससे कि आने वाला कल क्या फाइंड्स अस, हमको पाता है फर्दर और आगे दैन टुडे, आज की तुलना में. मैंने हमारे जो है मानव जीवन पाने का उद्देश्य ये है कि हम वर्तमान समय में कार्य करते जाएं और ताकि जो है आने वाले दिन में जो आने वाला कल है आज की तुलना में हमको और जो आगे पाए, हमको और जो है वो सुंदर पाए, हमको और जो है वो बेहतर पाए. द पोएट टेल्स अस दैट इन आवर प्रेजेंट टाइम्स वी हैव टू एक्ट ओनली. आवर मेन ड्यूटी इज टू एक्ट. Our main duty is to work only. And if we complete our duties, it will be the result that in future those works will make our future. And we have to do our duties so that in coming future, that future must find us better दैन टुडे. कहने का मतलब जो वर्तमान की तुलना में भविष्य में जो है वो हमको जो है वो हमारा समय और बेहतर रहे, हमारा जो है हमारी ज़िंदगी और अच्छी रहे, इसलिए हमको जो क्या करना है, कार्य ही करते जाना है. कार्य इसलिए करते जाना है ताकि जो आने वाला समय है, आने वाला जो कल है, आने वाला जो भविष्य है वो आज की तुलना में और बेहतर हो. इट मीन्स वी शुड कंप्लीट आवर ड्यूटीज more honestly so that coming future must find us better than today, better than the present time. Again, not enjoyment and not sorrow is our destiny and our way. The poet tells us that in our destiny, in our luck, in our fortune, it is not prefixed that we have to get enjoyment and sorrow. A man gets enjoyment or sorrow by his actions, by his present actions. It is not prefixed in his luck before some period. And this is not the style of human life that he has to get only enjoyment or sorrow. Our main duty is we have to act only. Our main duty of human life is that we have to act only. And these acts which are being done in present time, these actions will make our future better. And we have to act so that coming future must find us better than today. These things have been told by the poet in this beautiful stanza. माने दुख और सुख जो है हमारे जीवन में पहले से वर्णित नहीं है, इतना हमारे जीवन का उद्देश्य ही है. हमको जो है कार्य करते रहना है ताकि जो आने वाला कल है वो आज की तुलना में हमको आगे पाए. इन इंग्लिश द पोएट टेल्स अस दैट इन आवर लक इट इज नॉट प्रीफिक्स्ड दैट वी हैव टू get, we have to suffer only enjoyment and sorrow. These things depend upon the good or bad works of a man. If a man does good works, he will get enjoyment. If a man does bad works,
he will get sorrow only. These things are not prefixed. These things are not prefixed in the life of a man. This is the not style of a man. And the poet tells us that our main duty in human life is to act only. If we complete our duties, if we do our duties, in future our life will be better than today. And our main purpose is that we have to complete our duties so that in future our life must be better than present time or today's time. Thank you. Jai Hind.